Hi friends, this presentation is for the students of class 6, subject social science, book our past, and the chapter is what, where, how and when. Remember it is first presentation of this chapter. This presentation will be followed by more presentations. The content creator is Bashir Ahmed Gojri. Look at the picture of the globe. Here a portion is encircled with red color. This area is called South Asia and this presentation deals with this area of the world. On the world map, the South Asia is here encircled by this red curve and it is this area which is dealt with in this presentation. Here again South Asia on outline map of the world. It is this area and it includes the countries like Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan and Iran, besides China and Myanmar. Remember that South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills, and mountains. Now look at this outline map of the subcontinent of India. Here we have to locate the Kirthar mountains here, Kirthar hills. Above it in the here are Sulaiman Hills. And one more thing we have to locate it. This is Narmada River. And one more is Garo Hills. So Garo Hills are here. Narmada River flows like this. And these are Kirthar Hills and Sulaiman Hills. Again here, this encircled portion, this portion is the region around the Narmada River. This is the region of Sulaiman Hills and here this is the region of the Kirthar Hills and this is the region of Garo Hills. तो ये जो नर्मदा एरिया है इसके बारे में याद रहे इस एरिया के बारे में कि लोग यहाँ along the banks of river रहे हैं for several thousand years और इनमें से कुछ अर्लीस्ट लोग जो थे they were skilled gatherers. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests. They collected roots, fruits, and forest produce for their food. And remember, they also hunted animals. अब यहाँ जाते हैं कीर्थर हिल्स और सुलेमान हिल्स ये एरियाज जो है इनके बारे में याद रहे कि ये एरियाज जो है these are presently located in Pakistan and it is here where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. और यहाँ के लोग जो है they began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in villages. That means इस एरिया में आज से almost 8,000 years ago लोग रहे हैं ये लोग ग्रो करते थे क्रॉप्स जिनमें वीट और बार्ली काबिल जिक्र है ये जानवर जैसे शीप गोट और कैटल को भी पालते थे एंड दीज पीपल लिव्ड इन द विलेजेस एट दैट टाइम अब ये वाला पोर्शन जो गारो हिल्स पोर्शन है या यहाँ विंध्या रेंज है तो इन दो इलाकों का हम फिर से एक मावना जब करते हैं तो एंशियंट टाइम्स में यहाँ के लोग जो है they began agriculture. That means agriculture developed in this portion.
the portion of Garo Hills, and the Vindhyachal region. The place where rice was first grown are north to the Vindhyas. यहाँ विंध्या माउंटेन्स है. इन विंध्यास के नॉर्थ इस एरिया में पहली बार राइस ग्रो हुआ है. तो इस मैप की तरफ देखते हैं. इट इज लेवल्ड हियर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर फर्स्ट began इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार जो एग्रीकल्चर ग्रो हुआ है या एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, इट इज इन सुलेमान हिल्स, कीर्थर हिल्स, north of Narmada or north of Vindhya range and Garo hills. एक और लुक हम यहाँ देखते हैं. यहाँ से अगर आपको दिखता है तो दिस इज गंगा रिवर जो यहाँ से फ्लो होके फिर प्रेजेंट डे बांग्लादेश में जाता है. और यहाँ से एक और रिवर है जो गंगा को मीट करता है एट द प्लेस प्रेजेंटली कॉल्ड पटना. और एंशियंट हिस्ट्री में सिक्स्थ में आप पढ़ोगे इसका नाम पाटलिपुत्र रहा है. इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट दैट अ पावरफुल empire called Magadha emerged. तो यहाँ याद रहे, in ancient times areas along river Ganga and river Son to the south of the Ganga was known as Magadha. Now it lies in the state of Bihar. एक और चीज याद रहे, मगधन किंगडम के साथ और भी किंगडम्स सेटअप हुई इन रेस्ट ऑफ द इंडिया. This was all in this presentation. It will be followed by the second presentation of the same chapter with regards Bashir Ahmed Kojri.